Hello everyone. Good evening to all of you and welcome to this session. So we are going to do some mains level question in this session. हम mains level की तैयारी में practice questions. Quickly let me know if I'm properly audible and visible. आप सभी मुझे अच्छे से देख सुन सकते हो या नहीं? You can let me know in the chat here. So we already started the series. अगर आपको नहीं पता है पिछले वीडियो ज़रूर चेक करें. काइंडली डोंट वेट फॉर मोर डेज, विल सी आगे करेंगे जब पता चलेगा कि हुआ हमारा हमें मेंस देना है कि नहीं. नो नो नो, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज फिर टाइम नहीं बचेगा आपके पास कि आप स्पीड पर वर्क करें, एक्यूरेसी पर वर्क करें. वी ऑल नीड टू वर्क ऑन एवरी कॉम्पोनेंट इन अ बैलेंस्ड मैनर, है ना. सो we'll start doing questions in a minute. For those who are unaware, तो अभी because of होली एक ऑफ हो गया था, हॉलीडे आ गया था. बट क्लासेस कुछ इस तरीके से है मेरी मंडे, वेंसडेज एंड फ्राइडेज. 1:30 PM का प्राइमरी टाइम होता है हमारा ऑन आवर मेन चैनल CGB मेंटर्स. And on this channel, I have classes Tuesdays, Thursdays and Saturdays 1:30 PM same time. Okay. A bonus class 8 PM पर होती है every Saturday on CGB Mentors. So this is how it is. अब आप लोगों को यहाँ पर और दूसरे चैनल दोनों ही पे बहुत सारी प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट. यू गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवर देयर विद गाइडेंस, मेंटरशिप, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन. तो आप क्यों वहाँ पे नहीं जाएंगे, राइट? तो आप बोले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और शेयर कर दो वीडियो को फटाफट. और हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस. सो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं मेंस में. यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपकी रीडिंग अच्छी हो, जल्दी हो, कॉम्प्रीहेंशन अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन में क्या करना है और आंसर देना जल्द से जल्द आना चाहिए. Kindly read each and every sentence, everything properly, options properly, and then you answer. Okay, so first of all we'll see this answer. आंसर यहाँ पर है बी. क्वेश्चन आपसे पूछा था
that you have a passage here, then you have to read it carefully, identify which of the given options correctly explains the gist of the paragraph. Main theme, gist क्या है, मैसेज क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स देके क्वेश्चंस अक्सर मेंस में पूछे जाते हैं. सो वी हैव टू सी कि क्या सेंटेंस करेक्टली समराइज कर रहा है या फिर हमें आइडिया मेन जिस्ट बता रहा है, क्रक्स ऑफ द पैसेज बता रहा है. Already, robots are taking over a growing number of routine and repetitive tasks, putting workers in some sectors under serious pressure. So, robots क्या कर रहे हैं in South Korea, which has the world highest density of industrial robots, manufacturing employment is declining. ये इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट गिरता जा रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो गया है. द चैलेंज टुडे लाइज इन द फैक्ट, चैलेंज क्या है, that the production and the use of increasingly advanced technologies demand new skills. अभी नए नए skills चाहिए, manual job replace होता जा रहा है. Given this, countries need to ensure that all the residents have access to high education, high quality education and training programs. Basically, author बोल रहा है first half में he is setting a premise. सिनारियो क्या है, सिनारियो ये है कि मशीन्स टेक ओवर कर रही हैं लेबर या फिर रेपिटेटिव जॉब को, है ना, काफ़ी लेबर इंटेंसिव जॉब्स को. लोग चिंता में हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं, तो एंड में वो एक सोल्यूशन बताता है या फिर एक रास्ता बता रहा है कि हमें क्या करना पड़ सकता है. तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हायर लेवल स्किल्स एंड प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इट इज़ एसेंशियल if the countries want to safeguard the future of residents. रेसिडेंट्स को आगे बढ़ाना है, काम देना है, वी वांट पीपल टू लिव a quality life and earn nice, then आपको यहाँ पे B as a message of this passage मिल रहा है. A, B, A, C और D गलत क्यों है, ये भी जानना जरूरी है. Automation has had an adverse impact on the life of unskilled workers as they do not have means to access higher education. Now this could be true, हो सकता है ये वाली बात जो है वो definitely true हो, समझ में भी आ रहा है passage में से, but this is not the message or the summary of the passage. Passage की summary ये नहीं है कि access मिल ही नहीं रहा है, इस कारण से लोग पीछे हैं. Robots have replaced repetitive tasks and the aftermath is bound to be negative. मेरा author तो यहाँ पे positive ending कर रहा है that since scenario is a bit serious here, we can have a way out, और उसने वो बताया है. So C is half true. The challenge to ensuring jobs has been exacerbated और खराब हो गया है automation के द्वारा, as new jobs require highly developed skills. That is true. Again, B अपने आप में true है, but passage की summary नहीं है. Passage में author has told robots क्या कर रहे हैं, South Korea का example, and then he has mentioned a solution that could help to work upon this situation. So D उसकी summary में नहीं आता है. True होना अपने आप में is a different thing, but passage के ही parameters में answer जो था वो B था. Please go ahead, do this paragraph now. On this passage, we have a few questions. I think there are 4-5 questions based on this. So we'll do all of them together and then I will explain you.
ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, फॉर सम रीजन थोड़ा सा नीचे हो गया है, सो ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. Autocratic is the answer. Okay, the passage is changed. First, let's discuss this one. These two questions, and then we'll move to the next one. So, India's Motor Vehicles Act has remained in hibernation. It starts with something जो कि static है, activate नहीं हुआ है या actively चल नहीं रहा, unable to meet the needs of a large economy that is witnessing travel demand और पूरा नहीं कर पा रहा है. The amendments to the act voted by the parliament seek to address some of these challenges. Notably in forming a policy and a board, ये जो है वो ऑफर करेंगी स्टिफर पेनाल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ रूल, ऑर्डरली ऑपरेशन को भी मेक श्योर करेंगी ऑफ न्यू जनरेशन मोबिलिटी सर्विसेज दैट यूज मोबाइल फोन एप्लीकेशन. तो एक सिनारियो प्रेजेंटेड है, द एक्ट विच इज क्वाइट एन ओल्ड एक्ट वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या बदलाव लेकर आने हैं. नाउ योर क्वेश्चन हियर वाज अमंग द फॉलोइंग व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग द changes introduced in the act. These are contemporary changes. Okay, so अभी क्या होता है ना, कई बार when such a question is asked, you must be well aware of the word meanings, है ना. अदरवाइज अगर आपको वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता है यहाँ पर, तो आप कोई भी आंसर मार्क कर नहीं सकते. Anything which is contemporary, first of all, the meaning is it relates to the requirement of present day. Anything that is at present in trend, सिंक्रनी में है अभी के समय के, दैट्स व्हाट वी वांट, बिकॉज ये एक्ट जो है इट हैज रिमेन्ड इन हाइबरनेशन. नाउ द अमेंडमेंट्स इट सीक टू एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेस बाय ब्रिंगिंग समथिंग न्यू एंड ऑर्डरली ऑपरेशन ऑफ न्यू जनरेशन मोबिलिटी सर्विसेज. अब के ज़माने की चीज़ों की ज़रूरत है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे टोन जो है इन चेंजेस की वो है कंटेम्प्रेरी. एनीथिंग जो रेग्रेसिव होता है, इट इज़ जो एक पहले वाली स्टेज में जहाँ और नेसेंट स्टेज थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, वहाँ चले जाना. टर्मिनल इज एंड वाला. कंप्लायंट इज बीइंग कोऑपरेटिव, ओबीडियंट किसी के, तो यहाँ पे चेंजेस किसी को ओबे तो करने. देन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कमेंटेड रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ द ऑपोजिशन. अब आपके सामने थोड़ा सा और इसमें एडेड एक वर्जन है on the functioning of government towards passing bills. थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा आपको, इन देखते हैं हम. Days after the opposition accused the government, accuse करा passing bills without scrutiny. The opposition ने accuse करा. Which of the following can be commented regarding the opinion of opposition? तो अब उनका opposition का opinion क्या है? The government has proposed to send 4 pieces of legislation to a committee or select a committee. Opposition parties has demanded one bill, other bill, third bill, 3 bills to be sent to a select committee. However, their motions failed because they did not have the number. So यहाँ पे question है कि opinion of the opposition on the functioning of government towards passing bills. उनका motion deny हो गया, 3 उन्होंने bill के लिए demand करी. So here their opinion regarding the government at present government is autocratic. उनको लगता है कि ये लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ से जितने भी बिल्स हैं वो डिनाई हो गए. इसमें कुछ भी अर्नेस्ट रिपीट होने वाली या ओबे करने वाली बात नहीं.
question? Answer here is benevolent. I'll explain you this one and then we'll go to the next. Okay. Which among the following can be said regarding the management behind the Me Center in Bengaluru? क्या बोल सकते हैं देखते हैं. It is easy to miss the center as you drive through this area. There are no signboards on either way. The entrance is so small that a car might find it tough to pass. Even premises don't belong to those who run the center. They have rented it from an NGO. So यहाँ पे we need to answer इस सबको देखते हुए what we can say regarding the management behind the center. अभी दिख नहीं रहा है. It is nothing extravagant. It is nothing जो कि सबको show off करेगा. Okay, so defunct बोलना is something I don't have enough information on because maybe it's not that grand, but it is still running and I have no information if it is fully functioning or not. Okay, psychophant is a creep. इट्स समथिंग वेयर जहाँ पर बहुत ही पर्सन या जो भी चीज़ है वहाँ पे इट्स क्वाइट क्रीपी पर्सन काइंड ऑफ अ थिंग. एक हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देगा तो उसका भी मीनिंग नहीं है ना. बेनेवलेंट का मीनिंग आपको यहाँ समझना होगा. ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनेवलेंट इज कोई पर्सन जो काइंड है. ओके, जो पर्सन जेनरस है बट एट द सेम टाइम किसी को अकोमोडेट करने वाला है, हेल्पफुल है, कंसीडरेट है. नहीं ज़रूरत है बड़े एरिया की तो उन्होंने नहीं यूज़ करा. उन्होंने एनजीओ का साथ में जुड़ के शेयरिंग द स्पेस विद एन आंगनवाड़ी हो रहा है यहाँ पे. सो द होल आइडिया इज इट इज़ नॉट प्रॉफिट के साथ मिलके ज़्यादा शो ऑफ नहीं करने वाला. तो मैनेजमेंट जो थोड़ा सा है वो शायद चैरिटेबल है where they're saving money on a lot of things. ये कहा जा सकता है. नेक्स्ट वन. Answer is revolutionary and let's see how to get to this answer.
Again, what can be said regarding the idea of unschooling developed by these? An educator and author, John became disillusioned with the American school system. He propagated idea of letting children grow up without school. He said there should be no curriculum, classrooms, or exams. Hall Hot wrote the schools developed only a tiny part of the tremendous capacity of learning. Around the same time in Europe, other philosophers that criticized mass education caused a stir. Hart and Ilch are regarded as pioneers of unschooling. So it is a revolution. They are going against the stream, against the flow, where everyone is encouraging school jao jo hai wo padho. These people are saying that there is just a tiny part, but the greater part of learning happens outside the school, outside the curriculum. तो इनको इस तरीके से अगर देखें तो ये एक रेवोल्यूशनरी बात हम यहाँ पर देखेंगे. एनीथिंग दैट डिस्प्लेज समथिंग टू अदर पीपल इज रिवीलिंग. यहाँ पे ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है जो बाहर आ रहा है. रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूटिव. सो रेट्रीब्यूशन बेसिकली टॉक्स अबाउट जो पनिशमेंट मिलता है बिकॉज उसने एक्चुअली कुछ गलत किया है, एंड इट इज़ यूजली यूज फॉर लाइक क्राइम करना, नॉट छोटी मोटी गलती. तो वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा. एनीथिंग जहाँ पे डेट्रीमेंटल होती है, इट इज डैमेजिंग, dangerous. Nothing dangerous we get to see regarding the idea of unschooling. It is something that is just against the flow, and that's why वो revolutionary था. Okay, so answer here is composed. Now please understand again which among the following will explain the situation in which significant insights can be gained about life in general. These questions are more of copy. Everything that you have read, excuse me, you need to comprehend and then उसका एक निचोड़ निकाल कर आंसर देना होता है. Surprising discoveries and insights happen when you are really not looking for them. When your mind is relaxed and open, free from many things. So, surprising discoveries, insights happen in a carefree mind. I recently listened to The Economist speak to podcast host about scarcity, explaining how it can limit performance, particularly in the context of poverty. तो किसी का podcast सुना, which he says can claim a huge cognitive load. So यहाँ पे the situation in which insights can be gained. आप calm and composed रहेंगे, free, relaxed,
free from worries, open minded. That is the situation where a person is composed. प्रोडक्टिव तब होगा जब वो कंपोज होगा, तो प्रोडक्टिव इसका आंसर नहीं होगा. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में भी हमें आंसर क्या करना है आफ्टर ऑल, इजंट इट. अगर मैं आपको यहाँ पे दूसरी चीजें बताऊँ, अगेन सिचुएशन को तो कंपोज्ड वर्ड समझा रहा है. कॉन्स्पिक्यूअस इज इजीली क्लियरली विजिबल चीजें जो भी. ओके, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल तो नहीं है, बट यस योर माइंड नीड्स टू बी रिलैक्स्ड एंड ओपन, नॉट क्लियर एग्जैक्टली, तो वो नहीं होगा. इनहिबिशन इज पर्सन फीलिंग रिजर्व्ड, ओपन नहीं है वो, कंपोज्ड भी यहाँ पे. these are sentence connector questions. You have a connector here, you need to see कौन सा sentences इससे connect कर सकते. We have B and D. Now, while as a connector, you can use for two purposes. First one is when you have two things happening in the same time period. Another purpose is when two things are happening in contrast. Okay. So, LinkedIn found that 71% of employees now have a side hustle, and among them, 40% have used allotted time off to work on these extra endeavors. सो इतने लोग हैं जो कि साइड हसल्स मून लाइटिंग कर रहे एक तरीके से. इट शुड बी स्ट्रेस दैट रियल टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क एंड वेकेशन प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड बेटर हेल्थ. लिंक्डइन फाउंड दैट एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ दीज वर्कर्स, मीन्स पहले वाले कोई होना चाहिए उसके वन थर्ड, they said they found success by pursuing a passion project. डेफिनेटली ए एंड सी कनेक्टेड है, लेकिन वाइल से इन नो कॉन्ट्रास्ट नथिंग जो सेम टाइम में हो रहा है. इट इज अप टू एम्प्लॉइज अल्टीमेटली टू एज टू हाउ दे चूज टू यूज देयर टाइम. सो यहाँ पे बी एंड डी हम वाइल से बोल सकते हैं. वाइल फर्स्ट वे यू आर सेइंग इट इज स्ट्रेस्ड, इट शुड बी स्ट्रेस्ड दैट रियल टाइम ऑफ शुड हेल्प इन प्रोडक्टिविटी, बट एम्प्लॉयज के ऊपर है कि उनको क्या करना है टाइम से. सो दीज टू थिंग्स आर इन कॉन्ट्रास्ट. फर्स्ट यू आर स्ट्रेसिंग ऑन समथिंग, देन यू आर सेइंग ओके डोंट गो विद दिस, यू कैन डू व्हाटएवर यू. ये कॉन्ट्रास्ट था, बहुत इजी था. बी और डी साथ में आएंगे.
only if there is a condition. Okay, only ho ya if ho, even sometimes you have if word alone, but then of course वो एक condition को ही बताता है. Now this one says families who were caught together at the border and separated are now being offered opportunity to reunite. Family के बारे में कुछ हो रहा है. Agencies involved in family separation were so badly coordinated that it was impossible for parents to locate children. यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ गई, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की बात है. Families must agree to deportation, giving up their attempts to seek asylum and stay in the US. This could be something जो A से connect होगा as a condition. Families were offered the opportunity to reunite only if they agree to deportation. फिर must हट जाएगा because only if में already आप एक condition लगा रहे हो. Either a parent can keep fighting for asylum and accept that he may not be able to see his children. This is अपने आप में condition है. ये दो रास्ते हैं. This has nothing to do if I want to use only if as a connector. Please understand. All four sentences are on the same topic, on the same theme. The families and if they will get asylum, they can seek asylum or not, and getting deported and all those things, immigration related. But only if the condition, if you think that families have an opportunity है तो क्या एकदम clear cut opportunity होगी? No, there might be something no that they want, but there is a condition attached to it. तो थोड़ा logically भी सोचोगे तो आंसर A और C आपका आ जाएगा. Next one. B and C, you can put them together. Unless is also something that talks about a condition. So if you see, adults are supposed to know how to behave. Adults take expectation. They must know how to behave when presented with contrary ideas, to debate, overcome ideas, to decide with words, fact, and reason. तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए. But where free speech independence of ideas are concerned, the right is right and the left is wrong. And those on the left would be strongly against their own tactics if the roles were reversed. तो एक कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्टरी है. एक तरफ तो फ्री स्पीच है, बट अपने आप में इट स्टार्ट्स विद बट एंड सेज दैट जहाँ फ्री स्पीच है देयर इज सम अदर सिनेरियो गोइंग ऑन. ओके, more violence will result, and that is sad prospect for our future.
ठीक है, सो ये बोलता है मोर वायलेंस होगा विल रिजल्ट, क्यों होगा, कैसे होगा, सोचते हैं. द वायलेंट intolerant wing of the political left abandoned the strong arm tactics to get their ideas accepted. Now, यहाँ पे this intolerant wing abandons strong arm tactics. They are leaving it to get their ideas accepted. This is a good thing, but they are violent. The wing is violent, intolerant, but they are ready to let go. Now, unless they are ready to let go, more violence will result. Now, there can be a condition. जब तक तुम नहीं पीछे हटोगे, ऐसे ही चलता रहेगा, वायलेंस ही होता रहेगा. Understand it this way, and hence T and C, you can put them together. They'll give you a good sense. Wherein we can find anything and everything in politics by which what is happening, we wish to strengthen our narrative no matter how absurd it is. ठीक है, we can find everything anything in the politics. Author यहाँ पे वो चीज को बता रहा है. Politics is arguably the best case study. ये भी politics क्या है वो बता रहा है. The greatest enemy of knowledge is not ignorance. ये बहुत ही generic sentence है. Political education becomes an obligation and you may not have an opinion or make a decision. Instead, you are allowing someone else to make it on your behalf. ये थोड़ी और अलग बात है. देखो, wherein के दो मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग होता है in which, मतलब पहला सेंटेंस होगा in this scenario there is another part taking place. Okay, इस सिनारियो में in which this other thing exists, तो यहाँ हो रहा है. So politics is arguably the best case study. इसमें we get it is an act of knowledge and disinformation जिसमें we can find anything and everything in politics by which आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो इन विच को या बाय विच को आप यहाँ रिप्लेस करके क्या क्या आप पा रहे हो पॉलिटिक्स में एज ऑफ द ऑथर, जो ऑथर कहना चाह रहा है वो आप जोड़ सकते हो. एक और मीनिंग होता है वेर इन का, दैट इज इन व्हाट वे. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इन व्हाट वे, वेर इन लाइज द इशू. कहाँ है इशू बताओ ना, कैसे हो रहा है इशू बताओ. उस तरीके से अगर बात करते तो भी हम वेर इन का यूज करते हैं. यहाँ पे वो वाला यूज नहीं है. But I'll again give you another example, an easier example. This is the class wherein we discuss mains level English questions. So in which की replacement में wherein का use होता है, which is happening here B और A में B has to be the first one. उसी तरीके से आंसर आपके. ठीक है, चलो. So time for me to leave. Thank you so much all of you for attending the session. Today we have another session and that's going to be at 8 p.m. तो CSAT का session है हमारा, and I hope that you guys get a lot of exercise practice from that as well. TTB mentors पर 8 p.m. पर होगा. Till then, take care. I'll see you later on tomorrow, day after tomorrow in regular classes.